Very good evening to all of you. Dev Durlav Manset, hello. Romeo Pailan, Jayasree, Subhalakshmi, Vikas Ray, Aniket Singh, Yaswant Seth, Anand Kumar, Patel Chandrakant, Jyoti Parno, Mahazaveen, Abhishek, Himansu. So, are we all ready? Very good evening to all of you. So, before I start, I welcome all the new students. I welcome all the students who are attending the class for the first time. And I will give one small instruction to all the new students on how to interact with the teacher on this platform. So you have 5 icons in your device which is being reflected adjacent to your name. So the first option to interact with the teacher is by writing on the whiteboard which you are seeing here. The second option is to the camera option. You can show your face also to the teacher, and the voice option. But I will suggest all of you to not to use this camera option and voice option because it will cause lot of problem in delivering the class. The rest of the 2 options are using message option and the raising the hands option. Now all these icons are either in the red color or in the blue color. If it is in the red color, that means the permission has been denied to you by me. If it is in blue color, that means I have given you the permission to use that icon. So if you want to use it, then you will have to push that button to make it convert into green. Once the button has turned green, that means now you are ready to use that icon. So hope this description was useful for all of you. Today the room chat has been disabled due to some technical error. Tomorrow it will be resolved, Aniket. The room chat which is visible, students can see each other's message. But today it has been disabled due to the technical error, and tomorrow it will be resolved. So let's start. So yesterday I have given you the you can say a detailed discussion on Machiavelli. So Machiavelli is 80% complete. Some 20% is remaining in Machiavelli, but then today, once we know about the Thomas Hobbes, then you will be able to complete the remaining 20% of the Machiavelli. So Machiavelli is a philosopher, all for all those who do not know Machiavelli. And Thomas Hobbes is also a political philosopher. Machiavelli is famous for his political theory, for the political thought which he gave in his famous book Prince, right? And the second book which he wrote was a Discourse. If anybody has any problem related with the last class or any query with the last class, they can ask. Yes, Machiavelli is known as the father of European secularism. Machiavelli is known as the father of European secularism. So if you have any doubt related with the Machiavelli, you can ask. Otherwise, we will know something about
Yes, we will know something about the Thomas Hobbes. गुड इवनिंग चंद्रकांत, ये गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग हो गया, अब डाउट पूछो, प्लीज आस्क द डाउट. Any doubt, please ask. If you do not have doubt, then say no so that we can move forward. Sir, did Machiavelli believe in a delegation of power? No. Machiavelli did not. Machiavelli said that king should be sovereign and he should delegate power only to the trusted people. Only to very trusted people. So he believed in centralized arrangement. He never believed in organized delegation or permanent delegation, because people cannot be trusted. This is what Machiavelli said in his book Prince, that prince should never trust people because people are not wise, people are corrupt, indisciplined. Any other question? Any query for the people who are facing this platform for the first time? I see Vikas Ray, Himanshu, Yashwant, Abhishek, so many students are there. So please tell if you have any doubt here. So we will start now. Thomas Hobbes. Why is he famous for? Do you have any idea? Why Hobbes is famous? And do you know that Hobbes was the friend of Newton? He was the friend of Newton. Newton was his best friend. So let us see more about Hobbes. If you give clarity, we can move forward. So his time period is 1588 to 1679. So he is before Machiavelli or after Machiavelli? Machiavelli came in 1469, right? And he came in 15. Yes, 1679. And his famous book is Leviathan. So all these philosophers are writing their ideas in some book. So the most famous book is Leviathan. What is the meaning of Leviathan? A very big animal. So इसके अनुसार, as per Thomas Hobbes, state's appearance should be very, very big. State should not be small. State should perform many functions. So in simple language, Hobbes focused on a very powerful state. आई बात समझ में? Hobbes focused on a very, very powerful state, a very big state where state is very, very powerful. ठीक है? So let us understand about the Hobbes. I except Dev Durlabh, nobody is interacting and I am not liking this. Deepak Sahu, Romeo Palyan. A Venkatesh, good evening. Jayashree, state should not be challenged. Yes. So अब देखो दोनों में you have to find the relation. मैकियावेली चाहते थे कि what is the main theme of Machiavelli? Machiavelli wanted to form a very peaceful society, very democratic society. But he said that we cannot become a peaceful society, a civilized society, without becoming a disciplined society. And we cannot become a disciplined without becoming a nationalist. यानी
मैकियावेली की जो सोच है, द थिंकिंग ऑफ मैकियावेली इज व्हाट? स्टेट शुड बी पावरफुल, किंग शुड बी पावरफुल टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट. Hobbes is also focusing on powerful state, very, very powerful state. But the focus of Hobbes is not on making a nation state. Hobbes is more focused in protecting the individual. So, in simple language, मैकियावेली एक स्ट्रॉन्ग स्टेट इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि उनका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द नेशन. सो दैट मीन्स व्हाट वी कैन से, दिस इज अ नेशन स्टेट and this is protection of individual. Protection of individual. एक एक इंसान को सुरक्षा देने के लिए स्टेट को पावरफुल होना पड़ेगा. So here you have to understand. So who is believing that state should be powerful? Because power is needed to protect the nation and make a strong nation. अगर एक मजबूत राष्ट्र बनाना है, if you have to make a strong nation, then you will have to make the king very powerful. But power can be given only to a talented king, not to everybody. So this is the theory of Machiavelli. So Machiavelli is inclined towards protecting the nation. Machiavelli is inclined towards protecting the nation. But Hobbes has made all his theory and he is suggesting that state should be very powerful, but the objective of giving the power to the state is just not to protect the nation, but to give protection to every individual from rest of the society. आई बात समझ में? How many of you understood this? How many of you are understanding that Hobbes is inclined towards? Hobbes is more interested in protecting the existence of individual. So Hobbes is individualist or Hobbes is nationalist? Hobbes इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं या राष्ट्र को? Hobbes is more inclined towards yes, Spandan, you are correct. You are saying paramountcy of the state, but state should be paramount with an objective to protect individual or with the objective of protecting the nation. A. Venkatesh is saying individual. Anand Kumar, individual. Vikas Ray is saying individualistic approach equals to Hobbes. So Hobbes क्या है? Hobbes is advocating a very powerful state, a very brilliant state, a very sovereign state. Hobbes believes in sovereignty of state, yes or no? So you will find many similarities between Hobbes and Machiavelli, and you will find many differences also between Hobbes and Machiavelli. The central focus of Hobbes, the central focus of Hobbes, the central focus of Hobbes क्या है? To protect individual, और हर एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन के लिए स्टेट का अति पावरफुल होना जरूरी है.
it is not possible to guarantee individual protection to everybody in society until and unless we have made the state very powerful. आई बात समझ में? बोलो यस और लीबर हॉब्स वो मैं आगे डिस्कस करूंगा. आई विल डिस्कस देव दुर्लभ that what was his thinking on liberty. Romeo Palin, you are giving a wrong statement. Individual above state, you cannot say this. State is there to protect individual, but that doesn't mean individual is above the state. State is made more powerful. Nobody can question the state. Nobody can challenge the state because the state is existing for the protection of individual, each and every individual. But that doesn't mean that state or individual is above the state. Individual is everything, but practically you will have to give the power to the state. So practically the state is above everyone, and he is clarifying this. So we will discuss each and every fine detail, but first you have to understand the central idea of Hobbes in comparison with the central idea of Machiavelli. Anand Kumar has expressed in a very beautiful language. Anand Kumar is saying individual strong is directly proportional to strong nation. Yes, उसका ये कहना है कि Machiavelli is trying to make the nation strong without giving the security to the individual. So individual can never develop a feeling towards the nation, can never be loyal to the nation just by seeing the king loyal to the nation. That is not the complete idea of the individual's understanding. So Hobbes is saying that Machiavelli has not understood the individual properly. Machiavelli feels that you can solve all the problems of the society and the nation just by fixing the right leader at the king's place. मैकियावेली यही सोचते हैं कि अगर राजा हमने सही चुन लिया तो देश की सारी समस्या खत्म हो जाएगी. So that's why Hobbes is not so much proud, no, not so much in the favor of Machiavelli. As per Hobbes, Machiavelli is wrong in presuming that by selecting a right king, you will be able to solve all social problems and you will fix everything without fixing the individual level problem. इसका ये मतलब नहीं हुआ कि Hobbes will suggest many soft ways to deal with the individual. Hobbes is even more stricter than Machiavelli. जितना Machiavelli ने अपने राजा को strong बनाया, उससे ज्यादा Hobbes ने state को strong बनाया है. That we will see. I hope everybody can understand both the languages. Anybody who cannot understand Hindi at all? तो हॉब्स इंडिविजुअल के रक्षा के नाम पर, इन द नेम ऑफ गिविंग प्रोटेक्शन टू एवरी इंडिविजुअल, हॉब्स इज सेइंग इंडिविजुअल्स that you give all the power to the government, all the power to the state, and state will take care of all of you. Now, what is the basis why Hobbes is thinking in such a manner that we will discuss later? We will discuss later that what is Hobbes thinking, what is Hobbes' view of human being. Hobbes has a positive view or negative view. Why he suggested that only state can bring harmony among the people. So only state can bring fraternity among the people. तो हॉब्स का पूरा विश्वास है स्टेट पर कि सरकार का होना बहुत जरूरी है. स्टेट इज वेरी नेसेसरी टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स एट इंडिविजुअल लेवल इन द सोसाइटी. बट हॉब्स इज मेकिंग स्टेट वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रिक्ट. तो हॉब्स का स्टेट बहुत ही स्ट्रिक्ट है, लेकिन Hobbes ये justify करेगा. Hobbes will justify that state should be strict,
otherwise the state cannot ensure the protection of every individual. मैकिवेली तो फिर भी अपने राजा को कहता है कि समय देख करके द किंग शुड बी हार्ड एंड सॉफ्ट. So Machiavelli is giving you a balanced king. That king should try to appease the people, but Hobbes will never say to that king should the state should appease the people. So now, if you have understood the central idea of the Hobbes, that Hobbes is believing in a powerful state, a very strict state, and the fundamental objective of giving the power to the state and strictness to the state is to protect the each and every individual and guarantee individual security to everyone. But Kim Jong cannot be compared with Hobbes. Kim Jong cannot be example because Kim Jong has taken all the power for his own interest. King John is not interested in protecting its people. He is protected. He is self-interested. वो अपने हित के लिए सारी शक्ति लिया है. मैकिवेली का राजा देश हित में सारी शक्ति ले लेता है कि देश की रक्षा के नाम पे सारी शक्ति मैकिवेली के राजा के पास आ गई. लेकिन हॉब्स का स्टेट देश के नाम पे नहीं लेता है, इंडिविजुअल के सिक्योरिटी के नाम पे लेता है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी कंसर्न हॉब्स का क्या है कि लोगों का दुश्मन पाकिस्तान में बैठा है या लोगों का दुश्मन इंडिया का दुश्मन इंडिया में ही बैठा है? प्लीज टेल मी. मैकिवेली के अनुसार protecting the nation is very important because there is a presumption that outsiders are enemies. That's why you should be, king will protect you from external forces. ये मैकिवेली है. इसीलिए मैकिवेली राष्ट्र हित राष्ट्र सुरक्षा की बात करता है क्योंकि मैकिवेली के नजर में सबसे बड़ा दुश्मन देश के अंदर नहीं देश के बाहर है. देश के बाहर के लोगों से हमें देश के लोगों को सुरक्षा देने के लिए एक पावरफुल और एक मेरिट वाला लीडर चाहिए. बट हॉब्स की नजर में इंसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो बॉर्डर के उस पार नहीं बैठा है. वो इसी देश में आपका पड़ोसी, आपके बगल में जो इंसान घूम रहा है वही सबसे बड़ा आपका दुश्मन है और वही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है. और उससे रक्षा करने के लिए एक पावरफुल स्टेट बनाना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जय श्री आनंद पटेल, स्पंदन सिन्हा. सो द बिगेस्ट एनिमी इज आउटसाइड और इनसाइड एज पर हॉब्स. आनंद कुमार, द बिगेस्ट एनिमी इज इनसाइड. That means people are enemies of each other and everybody doubts each other. So we will see what was the Hobbes thinking in this regard. Right? So now let us see कि हॉब्स का जन्म किस पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस में हुआ, which will help us to understand the behavior of the Hobbes, the thinking of the Hobbes. So why Hobbes thought in this particular manner, we will try to understand. As we have understood the Machiavelli considered outside forces as the biggest enemy because the conditions of Italy were different. Italy was disintegrated. Italy was occupied by foreign powers, by external powers.
That's why Machiavelli realized that our greatest enemy is, बोलिए, our greatest enemy is outside. So I should develop a theory which gives protection from the foreign forces, and that is possible only when I bring unity among the people. And if I bring unity among the people, then only the people will become nationalistic. So nationalism is the virtue in the light of the political circumstances existing during the 15th century in the इटली का जो सबसे बड़ा, तो मैकियावेली का जन्म जिस फेज में हुआ, उस फेज में सबसे बड़ा इशू क्या था? फॉरेन डोमिनेशन, फॉरेन कंट्रोल, डिसइंटीग्रेशन, इश्यूज ऑफ नेशनलिज्म, वननेस, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये सारी समस्याएं थी. एंड ए फिलोसोफर इज ऑलवेज बॉर्न टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसी पर उसकी फिलॉसफी बनती है. सो दैट्स व्हाई मैकियावेली क्राफ्टेड ए फिलॉसफी टू सर्व द नीड ऑफ इट्स टाइम. जिस समय में मैकियावेली का जन्म हुआ, तो मैकियावेली इटली के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैकियावेली ने ये प्रिंस की थ्योरी दी कि अगर इटली के लोगों में नेशनलिज्म आ जाए, और वो तब आएगा जब इटली में एक मेरिट वाला लीडर आएगा, तो लीडर के गाइडेंस में इटली एक राष्ट्र बन सकता है और विदेशी मुल्कों से अपने आप को बचा सकता है. और अगर उसने अपने आप को फॉरेन पावर से बचा लिया, तो इटली एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बन जाएगी. बोलो, आ रहा है समझ में? प्लीज टेल मी. So now, are you understanding? So Italy was suffering from internal problem or external problem? Italy was from internal problem or external problem? Mainly it was the external problem. Internal problems were also there. People were corrupt. That's why they were not one. But उनको क्या लगा मैकियावेली को कि राष्ट्र बन जाएंगे हम, तो हम सब अच्छे समाज भी बन जाएंगे. तो राष्ट्र से समाज बनाना चाहते हैं कि इफ वी बिकम ए गुड कंट्री देन ओनली वी विल बिकम ए गुड नेशन. जब तक बाहर के दुश्मनों को हम यहां से नहीं भगाएंगे, जब तक सही लोग पावर में नहीं आएंगे तब तक, और जब तक सही लोग पावर में आके देश को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक सामाजिक समस्याएं ठीक नहीं हो सकती है. वी कैन नॉट सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स until and unless we ensure political security, national security. We become a good nation, a great nation. Then only, if right people will come to politics, then only we will be able to fix political problems. And once the political problems are solved, then only we will be able to fix the social problems. And this is quite similar to the understanding of Gandhi and Nehru as well. बोलिए. Even Gandhi and Nehru said that our social problems cannot overshadow our need to become independent from the British rule. तो पहले अंग्रेजों को भगाना जरूरी है, सही लोगों को पॉलिटिक्स में लाना जरूरी है, और इंडिया को स्टेबल करना पॉलिटिकली बहुत जरूरी है. तब जाकर के भारत के जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर पाएंगे. बताओ, समझ में आ रहा है? So we will be able to solve the social problems, and we will be able to modify people's behavior only when our homeland is safe from the outsiders. Only when the homeland, हमारा जो homeland है,
ये बाहर के दुश्मनों से जब तक सेफ नहीं होगा तब तक हम एक सभ्य समाज बना नहीं पाएंगे, अपने सामाजिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. We won't be able to solve our socio-economic problems until and unless we are ensured of our political identity, nationalist feeling and political stability and national security. कैसा लग रहा है? Are you enjoying this? देव दुर्लभ, अनिकेत, दीपक साहू, जयश्री, स्पंदन सिन्हा, विकास रे, हिमांशु, अभिषेक. जबकि अंबेडकर की सोच अलग थी. अंबेडकर फर्स्ट वांटेड, अंबेडकर के नजर में ब्रिटिशर से बड़ा दुश्मन ब्राह्मण्स थे. तो अंबेडकर के अनुसार इंटरनल प्रॉब्लम्स वेर मोर, यू कैन से, he was more concerned towards the internal issues of the country in comparison with the external issues. Similarly, Hobbes is also more worried about the behavior of the society, people living in the society, and he is less worried about the external threats. He is less worried about the external threats. Why? Why Hobbes was more worried about the internal threats and less about the external threats? Please tell. मैकियावेली के नजर में बाहरी समस्या ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस समय इटली के अंदर में नहीं युद्ध हो रहा था, बाहर में युद्ध हो रहे थे. इटली का बाहर से युद्ध होता था, एक्सटर्नल फॉरेन वॉर्स ज्यादा होते थे. इंटरनल रेबेलियंस कम थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कम थे, सिविल वॉर नहीं था अंदर में. लेकिन इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ और इंग्लैंड में सिविल वॉर हुआ. इंग्लैंड की उस समय किसी दूसरे देश से लड़ाई नहीं हुई. तो इंग्लैंड के लिए एक्सटर्नल थ्रेट कोई इशू नहीं था. इंग्लैंड में राष्ट्रवाद का कोई इशू नहीं था कि इंग्लैंड बहुत सारे, इंग्लैंड में डिसइंटीग्रेशन का इशू नहीं था. हॉब्स का जन्म इंग्लैंड में हुआ, मैकियावेली का जन्म इटली में हुआ. सो हॉब्स is the child of his circumstances and Machiavelli is the child of his circumstances. हॉब्स का जब जन्म हुआ तो ब्रिटेन में सिविल वॉर चल रहा था, इंटरनल रिबेलियंस चल रहे थे, एक्सटर्नल थ्रेट नहीं था. इंग्लैंड से कोई नहीं लड़ रहा था, इंग्लैंड के अंदर में लड़ाई हो रही थी. किसके बीच में? इंग्लैंड में कौन सी लड़ाई हो रही थी? प्लीज टेल. Between whom? Church, king and parliament. Church, king and parliament. Let us understand this. Do you know this fact? He has witnessed a Puritan revolution. ये क्या था समझते हैं? So let us understand. सो इंग्लैंड में बेसिकली रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स थे. एंड एज यू ऑल नो दैट ब्लैक एज से चर्च पावर वाज सपोज्ड टू बी ट्रांसफर्ड बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन द यूरोप. राइज ऑफ नेशनलिज्म इन द यूरोप, चर्च के पावर खत्म हो रही थी, चर्च की इंस्टीट्यूशन वाज विदरिंग अवे. And the power of, because of the rise of Renaissance, rise of nationalism, तो यूरोप के अंदर में इतने फोर्सेस आ गए जो चर्च के खिलाफ हो गया.
So there were many forces in England which was against the institution of the church, and they did not want any political power or administrative power to be vested in the church. चर्च के सख्त खिलाफ थे, अगेंस्ट द चर्च. अब दो ग्रुप्स थे. एक ग्रुप चाहता था कि चर्च की सारी पावर किसको मिल जाए? किंग को मिल जाए, राइट. एक ग्रुप था जो क्या चाहता था? चर्च की सारी पावर किसको मिल जाए? पार्लियामेंट को मिल जाए. सो दोज हु वेयर इन द फेवर ऑफ द पार्लियामेंट, they were what? They were Protestants who were funded by capitalists. तो इंग्लैंड के जो कैपिटलिस्ट्स थे, they were against church and they funded a new religious movement which was against the Orthodox Church, and they were known as Protestants. They were known as Protestants. Any problem in understanding प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक? और जो लोग कैथोलिक थे, दे वेर बेसिकली इन द फेवर ऑफ हुम? दैट चर्च की पावर किंग को ट्रांसफर होनी चाहिए. सो कैथोलिक वाज इन द फेवर ऑफ किंगशिप, ए वेरी पावरफुल किंगशिप, एंड द प्रोटेस्टेंट्स who are also known as anti-royalist, or they are also known as a Puritan. This is known as a Puritan revolution. So he was born during the Puritan revolution. So what is a Puritan revolution? Revolution done by Protestant against the church to transfer the power to the parliament. यहीं पे हॉब्स का जन्म होता है, and Hobbes is neither totally in the favor of the Catholic nor he was in the favor of the Protestant. In the light of this struggle between the Protestant and the Catholic, there was a rise of Hobbes, who gave the idea of Leviathan state. आई बात समझ में? सो हॉब्स का जन्म, हॉब्स ने जो मेन थ्योरी दी, जो मेन फिलॉसफी दी है, दैट इज इन द लाइट ऑफ द सिविल वॉर. Any doubts, please tell me. Dev Durlab, only Dev Durlab is interacting. There is nobody other than Dev Durlab, I guess. Anand Kumar, Venkatesh, Patel, Aniket, Romeo Pailan, Deepak Sahu, Jayasree, Spandan Sinha. Please tell. Yes, Anand. I am saying that with the rise of the Renaissance, with the rise of Reformation, there were many different forces in the England, and all these forces were pressurizing the church to transfer the power. Now there were two religious groups in the England. One was Catholic and one was the Protestant. So there was a rise of Protestant in the England. Protestants became very powerful with the help of the capitalists, and they wanted the church to transfer the power to the parliament, whereas the Catholic wanted the church to transfer the power from church to king. So Catholic believed in powerful kings, but Puritan or the Protestant, they wanted a powerful parliament. They wanted the power to be handed over to parliament. So Protestants wanted liberty for every individual. They wanted elected parliament, and they wanted to give limited power to the parliament. ये प्रोटेस्टेंट क्या चाहते थे? Protestant were against Catholic. Protestants did not want the domination of the church. They were fundamentally against the Orthodox Church also. They did not want the unlimited powers to be given to the king. Unlimited power के खिलाफ थे Protestant. क्यों? Because they were funded by capitalists. They wanted more and more liberty. They wanted less and less laws. और Protestant यही चाहता था
कि जो भी पावर हो पार्लियामेंट के पास हो, चर्च के पास कोई पावर नहीं हो, किंग के पास भी कोई पावर नहीं हो, पार्लियामेंट के पास पावर होनी चाहिए और लिमिटेड पावर होनी चाहिए। तो वो पार्लियामेंट को भी सोवरन या एब्सोल्यूट नहीं बनाना चाहते थे। प्रोटेस्टेंट नेवर वांटेड टू मेक और गिव अनलिमिटेड पावर टू पार्लियामेंट। दे वर अगेंस्ट गिविंग अनलिमिटेड पावर टू एनीवन, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दे देंगे तो फिर वो भी चर्च की तरह ही बिहेव करने लगेंगे। राइट। और कैथोलिक क्या चाहते थे कि चर्च का इंस्टीट्यूशन बचा रहे। किंग और चर्च में एक नेक्सस था। किंग जो है वो अभी भी ब्रिटेन की जो रानी है वही वहां के चर्च की हेड है, प्रेसिडेंट है। ऑल्दो ब्रिटेन इज ऑफिशियली सेक्युलर, but unofficially the royal family is the head of the church in Britain. Most of the church is owned by the queen and the crown in Britain. So officially they are separate from church, but unofficially they have personal investments in the church. They have not been separating. So they officially separated themselves from the church, but at personal level the relationship between the church and the royal family is very intricate. That's why Protestants were more democratic. They wanted more liberty. They wanted parliament to make less laws. They wanted parliament to give more freedom to the people. समझ रहे हो? ये पार्लियामेंट ये प्रोटेस्टेंट्स चाहते थे और कैथोलिक चाहता था। तो प्रोटेस्टेंट सेक्युलर चाहते थे। सो प्रोटेस्टेंट्स वांटेड सेक्युलरिज्म, प्रोटेस्टेंट्स वांटेड लिबर्टी, प्रोटेस्टेंट्स वांटेड what happened, Aniket? If you are not able to put your doubts here, you can put the doubts personally on my phone number. I am keeping my phone here. There is one technical problem for today. It will be resolved. Don't worry. And I am again telling you that you refresh your device. You keep on refreshing your device if there is any problem. Well, I am checking. Aniket, I am not able to see. Where is Aniket? Aniket saying your chat is, it is blue. There is no problem. Yes, Aniket, now your chat is visible in the chat box. So, Protestant wanted democracy, they wanted liberty, they wanted secularism, and they also wanted freedom of religion. है कि नहीं? जो ऑर्थोडॉक्स थे, they neither wanted secularism, they nor wanted freedom of religion, and they wanted the domination of the church and domination of the king. So Catholics were little bit orthodox in nature, whereas the Protestants were more liberal in nature. Spandan is also facing problem. Just wait. Spandan. Now you can try Spandan.
So you can just refresh one time and then you can use the chat. Please check if it is okay. Okay, if you have any doubts, then you can directly put the message here on my mobile, on WhatsApp, or either on Telegram. समझ में आ रहा है आप सबको? Okay, sorry for that, Aniket. Patel Chandrakant, Protestant seems more democratic. Romeo Palan, what was Hobbes' view? I am coming to Hobbes' view. First, understand the background. बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, प्रोटेस्टेंट्स का क्या एक्चुअल में डिमांड था, और कैथोलिक क्या चाहते थे, वो क्या डिफेंड कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि चर्च का पावर कम हो जाए, किंग की इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाए और ये देश सेकुलर हो जाए और रिलीजियस मैटर्स में सबको फ्रीडम मिल जाए और लिबर्टी मिल जाए, ऐसा नहीं चाहते थे। इसी बीच में हॉब्स आते हैं, हॉब्स इज कमिंग, करेक्ट, and then Hobbes will give his own viewpoint, which is somewhere the hybrid of what? Hybrid of orthodox or hybrid of, and but Hobbes is neither liked by Protestant nor liked by, Hobbes was neither liked by Protestant nor he was liked by the Catholics. Correct. So let us see what was the Hobbes thinking. So let us see. What is Hobbes' idea? So first Hobbes will give the idea of what? Individual. हॉब्स अपनी थ्योरी किस सिचुएशन में बनाए ये पता है, और हॉब्स ने ऐसी थ्योरी क्यों दी, व्हाट वाज हिज आइडिया ऑफ ह्यूमन बीइंग, लेट अस अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। समझते हैं व्हाट वाज द आइडिया ऑफ द हॉब्स। सी व्हाट हॉब्स इज सेइंग, दैट आवर ग्रेटेस्ट एनिमी इज व्हाट? Our greatest enemy is not Pakistan, not any foreign country. Our greatest enemy is our society. And why? And if society is our greatest enemy, so how to rectify the society, how to correct the society, how to make a peaceful society? So society is the main problem. And why society is the main problem? Why society is the main problem? Because everybody in the society, individual in the society is selfish. He is very selfish. He is only thinking to satisfy his desire. So he is talking about natural emotions and natural things and artificial. He has divided his analysis into natural and artificial. Natural and artificial. ध्यान से सुनना। What is natural? Something which is not created by you, something which is not in your control, right? For example, our desires, our will to maximize pleasure. So we all want to maximize pleasure. Is it natural or artificial? So when he saw the civil war, when he saw everybody is fighting against everybody, so he decided to do research on individual behavior. He decided to do research on individual behavior. And finally, he based his analysis on two things, natural and artificial. There are some natural components in our personality, and there are something artificial components in our personality. Let us understand what are natural components. For example, our desires. So our lower desires are mainly not in our control. Our lower desires are mainly not in our control. So हमारे जो desires हैं, जो internal forces हैं हमारे body के अंदर में, हमारे mind के अंदर में, they are pushing us for more and more. They are, so our
will is not in our control, and this willingness is coming from the desire. So desires are natural or artificial? Please tell. Desires are natural or artificial? Desires are mainly natural. Why? Because we do not have control on our desire. Our mind is not telling to develop the desire. We are human beings, and every human being is inherently full of desires. And one of your desire is being satisfied, then you develop other desire. When that desire is satisfied, then you develop the third desire. So you keep and keep on multiplying your desires. Your desires are unending, they are unsatiable, they are cyclic. Correct? सो ह्यूमन बींग्स का जो ये नेचर है कि उसकी जरूरत, उसके डिजायर्स कभी कम ही नहीं होते हैं. The more and more you will satisfy your desires, the more and more you will become hungry to satisfy more desire. So you want more, more and more. So you always want to maximize pleasure. This is your natural component of your personality. And so this is something which is very, very natural because you don't have control on it. तो इंसान, और यही जो नेचुरल इंसान के पर्सनालिटी का कंपोनेंट है, यही उसकी विशेषता है जिसकी वजह से सब उसे सेल्फिश कहते हैं. सो यू बिकम सेल्फिश बिकॉज ऑफ योर नेचुरलिटी. सेल्फिशनेस इज ए नेचुरल बिहेवियर. देयर इज, करेक्ट? Are we understanding this? That selfishness is our natural part of our personality. कुछ कर नहीं सकते इसका. हमको तो क्या करें, किसी को कुछ मिल जाता है तो हमें जलन होता है, जेलसी और ग्रीड, डिजायर, विलिंगनेस, सेल्फिशनेस. ये सब एकदम नेचुरल बात है. इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो चीज नेचुरल है वो प्योर हो गया, वो एथिकल हो गया. सो वॉट एवर इज नेचुरल इज नॉट एथिकल, और वॉट एवर इज नेचुरल दैट इज राइट है एंड वी शुड डू इट, ऐसा हॉब्स नहीं कहते हैं. लेकिन फिर हॉब्स क्या कहते हैं? इंसान प्लेजर को तो मैक्सिमाइज करना चाहता है, बट इंसान इंटेलिजेंट भी है. क्यों? क्योंकि इंसान इंटेलिजेंट क्यों है? क्योंकि इंसान को बहुत नॉलेज है. इंसान का माइंड जब बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करता है तो उसको सब पता चल जाता है. बहुत तेज दिमाग होता है इंसान का. उसको पता है कि अपने डिजायर्स को फुलफिल कैसे करेंगे, तो दुनिया में जो रिसोर्सेस हैं उसी से कर सकते हैं. उसको ये भी पता है कि अगर मैं किसी चीज को लेकर के एग्रेसिव और ऑब्सेसिव हूं तो सामने वाला भी ऑब्सेसिव और एग्रेसिव होगा. अगर मुझे एप्पल चाहिए तो दूसरे को भी एप्पल चाहिए. मुझे आईएएस बनना है, दूसरे को भी बनना है. बात समझ रहे हो? मुझे पैसा वाला बनना है तो दूसरे को भी पैसा वाला बनना है. मुझे कोई चीज चाहिए तो वो दूसरे को भी चाहिए, ये उसको पता होता है. आई बात समझ में? इंटेलेक्ट है उसके पास. So human beings are selfish but intelligent, and they know how to satisfy their desire, and they know that कि उसकी जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं, और अगर उसने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं किया तो वो मारा जाएगा. क्या होगा? अगर उसने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं किया तो वो मारा जाएगा. क्यों? कि जिस प्रकार से उसकी इच्छाएं अनंत हैं उसी प्रकार से दूसरों की भी इच्छाएं अनंत हैं. जिस तरह से वो कुछ पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसी तरह से दूसरे लोग भी अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. So the man is very intelligent. He knows that if I can go to any extent, even causing violence in order to satisfy my desire, then other human beings are also like me, and they can also go to any extent, and they can also enter into war to satisfy their. So human being is greedy, human being is selfish, but human being is intelligent, and human being knows. अब यहाँ पे समझना कि he has to, in every
pleasure there is a possibility of pain. हर प्रॉफिट में एक रिस्क है, उसको प्रॉफिट बढ़ाना है, रिस्क कम करना है, पेन को कम करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, प्लेजर को मैक्सिमाइज करना है। इंसान बहुत तेज है, उसको सामने वाले का भी बिहेवियर पता है और वो ये जानता है कि अगर उसने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है वो मारा जाए, दूसरों के हाथों मारा जाए, क्योंकि दूसरा अगर वो वायलेंट है तो सामने वाला भी वायलेंट है, अगर वो एम्बिशियस है तो सामने वाला भी एम्बिशियस है। इसीलिए मनुष्य एक सौदा कर लेता है, मनुष्य जो होता है वो एक एग्रीमेंट कर लेता है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, अपने इंटेलिजेंस से उसने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है सामने वालों के साथ कि ठीक है, हम प्लेजर के चक्कर में मारा नहीं जाए। अगर हमें चाहिए कि हमें लाइफ में प्लेजर मिलते रहे तो हमें अपने पेन को मिनिमाइज करना होगा, और इसी पेन को मिनिमाइज करने के लिए, वो अपने रिस्क को कम करने के लिए वो प्लेजर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि ठीक है, मुझे मैक्सिमम प्लेजर नहीं चाहिए, मुझे लिमिटेड प्लेजर ही चाहिए, और मेरे लिए प्लेजर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेजर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सिक्योरिटी ऑफ नॉट हैविंग पेन। तो इंसान के अंदर में ग्रीड बहुत है, लेकिन साथ ही में इंसान के पास बुद्धि है, इंटेलिजेंट है, इसीलिए वो एक सौदा कर लेता है, और सौदा और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है जिसमें वो अपनी सिक्योरिटी को एंश्योर करना चाहता है। सो ह्यूमन बीइंग्स फुल्ली नोइंग दैट they have maximum pleasure, but since human beings are intelligent, so they are ready to sacrifice their pleasure in order to avoid the pain. So human being is so much intelligent that in choosing pleasure and in choosing minimizing of pain and maximizing pleasure, finally the human being is using minimize pain or maximize pleasure. Tell me. नेचर कहता है, उसकी नेचुरल इंक्लिनेशन है प्लेजर को मैक्सिमाइज करो, लेकिन उसका दिमाग कहता है कि प्लेजर पेन को मिनिमाइज करो, और मिनिमाइज करना है अगर पेन को तो आपको प्लेजर सेक्रीफाइस करना होगा। सो ह्यूमन बीइंग agrees to sacrifice pleasure in order to avoid the pain. So please write it. Please write it. समझ में आया? So state is the result of state. So if desire is telling you to maximize pleasure, but your mind, your intelligence is saying you to minimize pain, and minimize pain करने के लिए you are fearful. So with this fear you are creating state. So state is the result of passion, or state is the result of fear. सरकार बनाना मजबूरी है, डर से बनाया है, नहीं बनेगा सरकार तो समाज, दूसरा आदमी आपको मार देगा। So you will be killed by other person if you do not make a state. So you are very intelligent, you do compromise, you do mental calculation. What is more better? You should be killed by your neighbor, or you should be, or state will kill you. What is the less probably? So he knows if state will not be there, then there is more chances that I may be killed by my neighbor. But there are less chances that state will kill me no matter how much power I give to the state. Therefore, all the individuals enter into a contract using their intelligent mind, and they tell to the state that
although we know that we have to maximize our pleasure, but since we are intelligent human beings, so we are ready to sacrifice all the pleasure because we don't want pleasure at the cost of death. So human beings cannot take risk. ह्यूमन बींग्स कैन नॉट टेक द रिस्क. ह्यूमन बींग को ऐसा प्लेजर नहीं चाहिए जिसमें वो मारा जाए. इसलिए इंसान को स्टेट पर ज्यादा भरोसा है या इंसान को अपने पड़ोसी पे ज्यादा भरोसा है? बताओ. इंसान को, ह्यूमन बींग हैज मोर ट्रस्ट ऑन द स्टेट और ऑन द नेबर, हैज मोर ट्रस्ट ऑन द स्टेट. सो ह्यूमन बींग इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट. एंड ह्यूमन बींग ऑल्दो वांट्स एवरीथिंग, वांट्स कि उसको दुनिया का सारा सुख मिल जाए, और सारा सुख मिलने के लिए बहुत सारा फ्रीडम चाहिए, लेकिन उसको पता है कि मैं फ्रीडम मांगूंगा, दूसरा वाला भी फ्रीडम मांगेगा, और मेरे और दूसरे के फ्रीडम का कहीं मैं विक्टिम ना बन जाऊं, वो रिस्क नहीं लेगा वो. तो हॉब्स कहता है कि इंसान इतना अक्लमंद है कि वो अपने प्लेजर को त्याग करने के लिए रेडी है ताकि वो जिंदा रह सके. अगर जिंदा रहना है तो आपको अपने पड़ोसी के फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा. तो इंसान इस एग्रीमेंट में आ जाता है कि ना मेरे पास फ्रीडम होगा ना पड़ोसी के पास फ्रीडम होगा, और सारी पावर हमने अपनी स्टेट को दे दी है, और स्टेट रेस्पॉन्सिबल है हम सबको सिक्योरिटी देने के लिए. स्टेट मुझे मेरे पड़ोसी से बचाएगा. तो हॉब्स कहता है कि वो ये भी सोच सकता है अगर स्टेट खुद अत्याचारी निकल जाए, तो ये कहता है कि नहीं, कितना भी हो स्टेट के अत्याचारी होने की प्रोबेबिलिटी नेबर के अत्याचारी होने से कम है या ज्यादा है? स्टेट विल बिकम मोर एट्रोसियस और नेबर विल बिकम मोर एट्रोसियस. अगर नेबर, पड़ोसी को ज्यादा पावर मिल गया और फ्रीडम मिल गई, तो पड़ोसी का अत्याचारी होना ज्यादा प्रोबेबल है. इट इज मोर लाइकली that if more freedom is given to the society, then society will harm you, and it is less likely that state will harm you if state has been given more power. So I have two options. Either I will make my society more free and more powerful, or I will make my state more powerful. If I make society more powerful, more freedom, that means I am giving the license to everybody to do anything what they want. And if I have given freedom to all the members in my society, अगर मैं ये लोगों को कह दूं ठीक है जो मेरी मर्जी वो मैं करूंगा, जो तुम्हारी मर्जी तुम करो. अब जब हम ये किसी को कहते हैं तो हमें डर लग जाता है कि कहीं सामने वाले को मैंने पूरी फ्रीडम दे दी, अब वो 150 के स्पीड से गाड़ी चला के मेरे को मार दिया कल, तो समझ रहे हो? तो व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट है कि दूसरे व्यक्ति को वो मैक्सिमम फ्रीडम नहीं देना चाहता है. इससे अच्छा वो स्टेट को पावरफुल बना देगा. तभी एक इंसान दूसरे इंसान से यह सौदा करता है कि ना मेरे पास स्टेट चलाने की फ्रीडम होगा ना आपके पास. हम सबके लिए जीना ज्यादा जरूरी है. लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्लेजर. लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्लेजर. जान बची तो लाखों पाए. अगर जान है तो जहान है. तो जान बचेगी तो कुछ कर पाएंगे, आगे की जिंदगी देख लेंगे. तो धीरे धीरे हमें प्लेजर मिलते रहे, हमें वही पसंद है. जिंदा रहेंगे तो जिंदा रहने का सुख मिलेगा. हमें अय्यासी नहीं चाहिए, हमें फ्रीडम नहीं चाहिए, बहुत स्वतंत्रता नहीं चाहिए. क्योंकि अगर हम स्वतंत्रता मांगेंगे तो पड़ोसी भी मांगेगा, और पड़ोसी की स्वतंत्रता मिल गई तो उससे वो कुछ अच्छा करेगा या बुरा करेगा, ज्यादा चांस है कि फ्रीडम का मिसयूज होता है. वो उस फ्रीडम से कहीं बंदूक लेकर के मेरे को गोली ना मार दे. अगर हर किसी को फ्रीडम दे दिया हथियार रखने का, तो इंसान के मन में पहला डर यही हुआ कि हम सोए रहेंगे, पड़ोसी गोली मार के चला जाएगा. इससे अच्छा है कि ना मेरे पास बंदूक होगा ना आपके पास बंदूक होगा. हम दोनों को चोर से रक्षा कौन करेगा? हमारा स्टेट करेगा. और स्टेट अपने पावर का मिसयूज करेगा इंडिविजुअल के अगेंस्ट, इसके चांसेस कम हैं. लेकिन फ्रीडम
सोसाइटी अपने पावर्स और नेबर अपने पावर का मिसयूज करेंगे, इस बात के चांसेस ज्यादा हैं. So please tell me if you have understood this analysis of Hobbes. So Hobbes, as per the Hobbes, whatever you create with your mind is artificial. So state is natural or artificial? USA is a very civilized state. That's why we are allowing everybody, because private defense is one of the main elements of the freedom and liberty. वो लिबर्टी क्या जिसमें आप अपनी रक्षा खुद नहीं कर सके, और ये एज्यूम्ड है कि सब लोग सिविलाइज्ड हैं, इसलिए दे विल नॉट मिसयूज देयर गन कीपिंग पावर्स. स्पंदन इज आस्किंग दैट व्हाई इन अमेरिका पीपल आर गिविंग द, ये बंदूक रखने का पीपल आर गिवन द राइट टू कीप द आर्म्स, व्हाई द आर्म्स लॉज आर सो रिलैक्स्ड. Well, there are so many reasons for that. Basically, to give momentum to the arms industry. Maybe it is a conspiracy of the arms manufacturer so that उनका आर्म्स ज्यादा से ज्यादा बिके. However, political justification ये है कि people are civilized and they will not misuse their gun. So as per Hobbes, Romeo is saying artificial, Patel is saying artificial. Venkatesh, what is your viewpoint? Jayashree is saying artificial. Yes. As per state, as per Hobbes, स्टेट से ज्यादा खतरा हमें सोसाइटी से, इसलिए सोसाइटी को फ्रीडम नहीं दे सकते, भले ही स्टेट सारी हमारी फ्रीडम ले ले और पावरफुल बन जाए. मतलब पुलिस अत्याचार करेगा बर्दाश्त कर लेंगे, पड़ोसी अत्याचार करेगा बर्दाश्त नहीं करेंगे. आई बात समझ में? पुलिस से मार खा लूंगा लेकिन ब्राह्मण से मार नहीं खाऊंगा, किसी क्षत्रिय से मार नहीं खाऊंगा. पुलिस का अत्याचार बर्दाश्त कर सकते हैं, पुलिस की मनमानी सह सकते हैं, किसी और का आंख, कोई और मुझे आंख नहीं दिखा सकता. कैसा लग रहा है समझने में? क्लैरिटी डेवलप हो रही है? प्लीज टेल. Aniket Singh, yes sir. Romeo Pailan, yes sir. Dev Durlav, Venkatesh. Here Hobbes' state will be led by whom? We are coming on that, Jayashree, don't worry. So Hobbes is giving all powers to the state, thinking that state needs such amount of power to give guarantee of individual security to everybody. And that's why he said that state is artificial, but state is not temporary, state is permanent, because fear is permanent. Why fear is permanent? Because desires are permanent. So if desires are permanent, you will permanently try to maximize it. So whenever you will try to maximize your pleasure, then others will also try to maximize pleasure. So your pleasure is against others' pleasure. Your pleasure is against others' pleasure. So maybe it is possible that you may be killed as a part of others' pleasure. So if you want to protect your pleasure from others' pleasure, then you will have to minimize your pleasure, and you have to take what? Take others' pleasure also by entering into a contract with the other. So you both will sacrifice the pleasure because you both doubt each other that you may be killed by each other. And in this course, you are ready to give more and more power to the state, who will ensure that you both are not killed by each other. कैसा लगा सुनने में? So state ensures. आया समझ में? So when you are trying to maximize your pleasure, others will also try to maximize your pleasure. And when others are trying to maximize their pleasure, then you may become victim and you may be killed because of others' pleasure. And since you don't want to be killed, so you will like other to use less pleasure. But then that other will tell you also to minimize your pleasure. So you both doubt each other that your pleasure can kill each other. So therefore you both are ready to sacrifice your pleasure
and give more and more power to the state who will ensure that you both are not killed by each other. So गार्जियन नहीं बोला इसने, बोला स्टेट मजबूरी है, इट इज रिजल्ट ऑफ फियर. हाउ कैन यू से गार्जियन? गार्जियन तो is always a, what do you say, guardian is a necessary, a natural feeling. There is an emotional connection with the guardian. So here state, you are not creating state because of the passion for the state. You want to have a guardian because you have the passion with the guardian. So that is a wrong comparison when you say that state is like, state is here nightman, watchman, like watchman. जैसे हम वॉचमैन को खड़ा करते हैं तो ये हमारा स्टेट एक वॉचमैन की तरह है, who keeps an eye on everybody's behavior. So it's like you want your other's wife, but others also want your, so you want your wife and others' wife, and others also want their wife and your wife. Now there is a competition between you and others. So you think that you will take others' wife, others think that they will take your wife, and you have a risk. You think that you will be left wifeless. So therefore, you don't want to take that risk. So you are ready to sacrifice your desire for having others' wife. And for that, you give more and more power to the state, who ensures that none of will attack and take away each other's wife. By this way also you can understand. Hobbes, Anand Kumar, Hobbes says giving power to the society. So you cannot compare with the teacher also, Jayasri. The comparison is a night watchman, where night watchman is the product of our intelligence. We do not have any emotional connection with the night watchman who is guarding us. He is just a necessary with no emotional attachment. But with the teacher, there is an emotional attachment. We need a teacher for some natural reasons. And in that course, we develop the relation. So teacher you cannot use because there is an organic relation with the teacher. Spandan Sinha is asking, Spandan, your chat box is working here also now. That adultery law, yes. So adultery law is basically the part of the Hobbes idea, was based on Hobbes philosophy. Yes, very good. तो ना आप दूसरे की वाइफ को चेस कर सकते, ना दूसरा आपकी वाइफ को चेस कर सकता है कि नहीं? सो मोनोगैमी एक तरह से. आनंद कुमार, लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान वांट्स टू फाइट but both have fear of nuclear power. Yes, therefore they should enter into a peace agreement. लेकिन peace हुआ कहाँ है? तो स्टेट को हमने आर्टिफिशियल लाके खड़ा कर दिया, हमारी मजबूरी है, इसके बिना हम जी भी नहीं सकते. कोई पैशन से स्टेट क्रिएट नहीं होता है. स्टेट में हमें कोई वर्च्यू नहीं दिखता है कि स्टेट में वर्च्यू है, स्टेट जो है वो आइडियल है, स्टेट डिवाइन है, या स्टेट एथनिक है, सॉरी एथिकल है. ऐसा कुछ नहीं है कि ये मोरालिटी है, हमें स्टेट को रखना पड़ेगा. नहीं, स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ योर इंटेलिजेंस. करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, अनअवॉइडेबल है और आपके पास उसका कोई ऑप्शन नहीं है. यू हैव नो अल्टरनेटिव ऑफ स्टेट. सो स्टेट इज born in this way. This is what the Hobbes is saying. तो ये तो पता चल गया कि स्टेट इज इंडिस्पेंसिबल एंड स्टेट हैज, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ दी, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ स्टेट. इतना तो हमें क्लैरिटी आ गई है, समझ गए. और हॉब्स कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिस्टिक भी है और कहीं ना कहीं यूटिलिटेरियन भी है और हॉब्स कहीं ना कहीं मैटेरियलिस्टिक भी है. Let us see the next part. अब सवाल आता है कि उसने स्टेट को बारे में बताया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नेचुरल,
कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट. और अगर स्टेट नहीं होगा तो स्टेट ऑफ नेचर क्या होगा? वी ऑल विल फाइट विथ ईच अदर एंड वी ऑल विल किल ईच अदर. सो स्टेट इज वेरी नेसेसरी. State is very necessary and state is formed of social contract. Now the question is कि ये social contract कैसा होगा? What kind of social contract will be? What kind of social contract? Right? What kind of social contract? So he believes in contract. He believes in contract, that there will be a contract. V. Venkatesh is saying the marriage can be what? Your comment is half A. Venkatesh. So state is just like a machine which is the product of man's intelligence, whose purpose is to serve and give security to everybody. So here we have to understand four things: human nature, state of nature, contract, and outcome of the contract. Of course. So Spandan Sinha, state is Chaukidar. Very good. State is Chaukidar. That is the correct, and you can say that is the correct corollary. That is the correct, you can say, comparison. That is the correct analogy. Correct. State of nature क्या होता है? What is human state of nature? Is a hypothesis that what will happen to all of us if there will not be state. And then comes contract. So which kind of contract? So here we are going to study following topics. Please write: social contract versus individual. First we will study social contract versus individual. What is the position of individual in the social contract? Second, we will see social contract versus sovereignty. Social contract versus sovereignty. And third, we are going to see social contract versus law. Social contract versus law. And fourth, social contract versus religion. Social contract versus religion. Right? Fifth, social contract versus liberty. Social contract versus liberty. And then social contract versus rule of law and due process of law also. Due process of law.
and then we will see social contract versus justice. So rule of law, due process of law, and social contract versus justice. So first is social contract versus individual. Second is social contract versus sovereignty. Third is social contract versus law. Fourth is social contract versus religion. Fifth is social contract versus liberty. Sixth is a social contract versus rule of law. Are we all ready? Have you written? And you have to make the notes as you are making the notes in physical class. So all of you are ready for that, to make the notes as we are making the notes in physical class, especially in the optional class. Note making is very important. Just wanted to know that how many of you are attending the session for the first time. So first we will see कि हमें कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए, what kind of contract we should make and what should be the role of individual and how much liberty should be given to the individual. And then we will see कि इस contract, social contract versus sovereignty, that they are limited sovereignty or absolute sovereignty. Social contract versus laws, कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लॉ को लेकर के लॉज कितने बनेंगे, मोर लॉज और लेस लॉज. सोशल कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस रिलीजियन, कि इन दिस कॉन्ट्रैक्ट व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ रिलीजियन, वेदर द स्टेट will have relation with the church or not, whether there will be freedom of religion or not, whether the state will invest in religion or not. So what will be the relation of state with the religion as per the contract. तो religion को लेकर के कैसा contract बनेगा, laws को लेकर के कैसा contract बनेगा, sovereignty को लेकर के कैसा contract बनेगा, individual के freedom को लेकर के कैसा contract बनेगा, and there will be law, rule of law or not, or due process of law or not, and justice or not. So first let us see social contract versus individual. Right? Social contract versus individual. So as per the contract, human being is always doubtful of the other human being. उसे हमेशा यही डर लगता है, he may be killed by some other human being. So any person is less threatful of the state in comparison with the society. हमें सोसाइटी से ज्यादा डर लगता है और सरकार से कम, ऐसा मैं नहीं, हॉब्स कहते हैं. So Hobbes says that human nature is doubtful in nature. Human always doubts other human. Why we doubt other human? Because we are also like other human. Why we feel that we may be killed by others? Because we have also certain kinds of emotions to kill each other. That's why we keep on doubting other. ये होता है ना? Please tell me. इंसान को दूसरे इंसान पर इतना शक क्यों है? क्योंकि वो खुद खराब है. वो दूसरे पे शक करता है उसे क्योंकि वो खुद वायलेंट है, खुद सेल्फिश है, सारी बुराइयां उसके अंदर में हैं, इसीलिए उसे पूरी दुनिया बुरी लगती है. और इंसान अगर अच्छा है तो उसे सब में अच्छाई लगती है. दिस इज अ वेरी ओल्ड एथिकल लेसन्स, मोरल लेसन्स.
We have learned so many things in the basic moral science. आप भला तो जग भला. If you are good, then you will feel others are also good. If you are bad, then you will feel others are also bad. So human beings are like this only. इंसान कभी भी दूसरे पे विश्वास इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि उसको पता है कि वो खुद विश्वासघाती है. So human being doesn't know how to trust others, and especially human being doesn't have the trust on other individual or isolated individuals or isolated society. But human being has every reason to believe that state will be more trustworthy than the society. आनंद कुमार, बुरा जो देखे मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपने मुझसे बिरा न कोई. यस, वेरी गुड आनंद. जयश्री मिरर इमेज, रोमियो पैलन, दीपक साहू, विकास रे, वेंकटेश. So are you all understanding this? So how much in this contract, if the human being wants to, so social contract and state is a insurance of human life. State एक इंश्योरेंस है, चौकीदार तो है ही, इंश्योरेंस है. और हम सबको पता है कि अगर स्टेट इंस्टीट्यूशन बना के उसे पावरफुल बनाया गया तो state institution will take more care and they will guarantee us from the vices of the society. So if you want to protect yourself from the society, from your neighbors, from your enemies, then you have to give more and more power to the state. And that's why they have entered into a contract where they have given. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कितना ज्यादा इंडिविजुअल को हम लिबर्टी देंगे और नहीं देंगे. तो ये क्या कहता है कॉन्ट्रैक्ट? हॉब्स सेज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर सो इंटेलिजेंट दैट दे शुड क्रिएट ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड दे शुड क्रिएट ए स्टेट इन विच they will give no power to individual except the right to life and right to private defense. Life and private defense. सिर्फ केवल यही दो फ्रीडम है आपके पास, लाइफ प्लस प्राइवेट डिफेंस. नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सब नहीं है. सो हॉब्स बिलीव्स इन फेयर. हॉब्स बिलीव्स इन व्हाट? More freedom or less freedom? Hobbes is believing in giving more freedom or minimum freedom, less freedom. कहता है राइट टू, और कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान से सुनो, कॉन्ट्रैक्ट आपको कोई फ्रीडम नहीं देगा एक्सेप्ट लाइफ एंड प्राइवेट, एक्सेप्ट लाइफ एंड प्राइवेट डिफेंस. और जिन जिन मामलों पे लॉज नहीं है वहां पे आपको एक हिडन फ्रीडम होगा. फॉर एग्जाम्पल, स्टेट हैज गिवन यू ओनली द फ्रीडम ऑन लाइफ एंड प्राइवेट डिफेंस. नाउ स्टेट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग लॉज to take away rest of the freedoms. Are you understanding this? यानी स्टेट ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए अगर कोई लॉ लाया है तो वो लॉ वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, क्योंकि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट ने कह दिया लाइफ और प्राइवेट डिफेंस छोड़ करके आपका किसी भी फ्रीडम पर अधिकार नहीं है. यानी आपकी कोई भी फ्रीडम जो है गवर्नमेंट कभी भी छीन सकता है. Tell me yes or no. People do not have the right on any freedom except life and private defense. And if government is making a law to restrict your freedom in any area, then such laws will be valid and individual cannot challenge that law. जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बैन लगा दिया, शराब पीने पे बैन लगा दिया गया,
प्रोस्टिट्यूशन पे बैन लगा दिया गया, ड्रग्स पर बैन लगा दिया गया, पबजी पर बैन लगा दिया गया, है कि नहीं, प्रॉपर्टी रखने पर बैन लगा दिया गया, मल्टीपल वाइफ्स पर बैन लगा दिया गया। तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज पे बैन लगाया जा सकता है एक्सेप्ट लाइफ एंड प्राइवेट डिफेंस। प्रॉपर्टी पे लग सकती है, किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन पे लग सकता है बैन, किसी भी चीज पर बैन लगा देगी। ये ऐसा स्टेट बना रहा है जो सिर्फ बैन लगाता है। और जिस जिस एरिया में बैन नहीं लगा है, आप केवल उसी एरिया में ऑपरेट कर सकते हैं। यानी अगर प्रोस्टिट्यूशन पर बैन नहीं है तो आप ऑपरेट कर सकते हैं प्रोस्टिट्यूशन में, लेकिन वो आपका कोई अधिकार नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं हिडन फ्रीडम। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? सो यू हैव हिडन फ्रीडम, and wherever there are laws there is no freedom. So UPSC has asked this question in prelims examination that which of the statement is correct as, और उसमें से एक ऑप्शन रहेगा as per Hobbes। as per Hobbes जो है, laws means no freedom. This is right statement or wrong statement? More laws means no freedom. There cannot be, if there is a law there cannot be freedom. Right or wrong? Right or wrong? Right. और इसी के उल्टे में लॉक आएंगे, लॉक विल टेल यू कि विदाउट लॉज देयर कैन नॉट बी फ्रीडम। तो एक कहता है अगर कानून बन गया तो हमारा अधिकार खत्म, और दूसरा लॉक क्या कहेंगे, जो लॉक विल बी द नेक्स्ट फिलोसफर विच वी विल स्टडी। लॉक विल टेल कि विदाउट लॉज वी कैन नॉट एंजॉय अवर फ्रीडम। सो इफ वी हैव टू एंजॉय अवर फ्रीडम देन वी विल हैव टू मेक लॉज फॉर दोज पीपल हु कैन बी बैरियर इन अवर फ्रीडम। So Locke is saying that if you want to enjoy freedom, then you will have to make the laws for the people who are the enemies of your freedom. But Hobbes is saying that if you will enjoy freedom and you want no laws to restrict your freedom, then your enemies will come and they will attack your freedom. How many of you understood this? Hobbes क्या कहते हैं, अगर फ्रीडम चाहिए होगा और आप चाहते हो कि हम कोई लॉ नहीं बनाए, तो आपके फ्रीडम का जो दुश्मन होगा वो आपके फ्रीडम को खत्म कर देगा। इसलिए हम लॉज इसलिए बनाते हैं कि भले ही आप फ्रीडम एंजॉय ना कर सको, लेकिन आपके अस्तित्व आप सरवाइव कर सको। सो हॉब्स इज टेलिंग यू दैट लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन फ्रीडम। आर वी अंडरस्टैंड दिस? Whereas John Locke will tell you that if the government will not make the laws, then the enemies of your freedom will take away your freedom. So if you want to enjoy your freedom, then you should allow the government to make more and more laws. So more and more laws means more and more freedom. But Hobbes will tell more and more laws means no freedom or less freedom. More the laws, lesser the freedom. Who is saying this? Hobbes. Locke क्या कहते हैं? More the laws, more the freedom. जितना कानून होगा उतनी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे फ्रीडम को रेगुलेट करने के लिए ही सारा लॉज बनाया गया है। कैसा लग रहा है? आर यू एंजॉयिंग द क्लास? So that's why now you have to compare this. Hobbes is against, he's not against your freedom, but he says that if we will give freedom to everybody, then the life will be at risk. We may be killed by our neighbors only, we may be killed by other person only. So if we want to survive ourselves, then we will have to all sacrifice our pleasure, because we all are intelligent people, and therefore like you people, if you want to clear UPSC, then you will have to restrict freedom or increase freedom. Please tell me. According to Hobbes, you will be able to clear UPSC only if you sacrifice more or sacrifice less. So until and unless you do not sacrifice your desires, अभी
at this young age, you may have the desire to do so many things like watching movie, going to see your friends, doing so many exciting things. But if you are busy in doing more and more freedom, then you won't be able to clear UPSC, because UPSC is a security. So we should live for security or we should live for freedom. If you clear UPSC, then you will be able to give security to your life. देखो, यूपीएससी इज लाइक द बेस्ट सिक्योरिटी ऑफ योर लाइफ. एक बार आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, कोई नौकरी नहीं निकाल सकता है. वेरी डिफिकल्ट टू टेक अवे द जॉब ऑफ आईएएस एंड आईपीएस. एंड रेस्पेक्ट अलग मिलेगी. तो इसमें फुल पैकेज है, जिसके लिए हमको अभी थोड़ा सेक्रीफाइस करना होगा. और अगर सेक्रीफाइस कर लिया तो अवर लाइफ विल बिकम यूनिक. Our life will become unique, isn't it? So Hobbes is saying that your freedom is temporary. It gives only temporary satisfaction to your desires. More important is your security, which will help you in surviving on this world. So if you have to survive here permanently, if you have the willingness to survive, then you will have to enjoy less freedom. अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सुख कम करो, क्योंकि सुख के चक्कर में सोचोगे कि मैं शराब भी पीऊं, मैं नॉनवेज भी खाऊं, मैं हर तरह की मस्ती करूं, तो ज्यादा दिन जी नहीं पाओगे, है कि नहीं? और अगर ज्यादा दिन जीना चाहते हो तो यू हैव टू डू स्ट्रिक्ट डाइट, यू हैव टू कंट्रोल योर डिजायर्स, राइट? सो इफ यू कंट्रोल योर, ऑप्शन इज बिलोंगिंग टू यू. एंड हुएवर विल बी इंटेलिजेंट, जो इंसान इंटेलिजेंट होगा वो फ्रीडम और सिक्योरिटी में क्या चूज करेगा? फ्रीडम और सिक्योरिटी, प्लीज टेल. इंटेलिजेंट पीपल विल चूज फ्रीडम और सिक्योरिटी. Security. What you people will choose? Are you all intelligent? And if you all are intelligent, you will choose security or freedom. You will work hard, you will study hard to become an IAS officer, or you will go and do clubbing, friendship. ये क्या करोगे? Security. If you want your later part of the life to be live with dignity, then you have to sacrifice more and more. The more sacrifice, more security. Less sacrifice, less security. So security is directly proportional to sacrifice. So that's why this contract will give less freedom to individual. Why? Because if you will give more freedom to individual, then individuals will misuse their freedom and they will kill other individual. So they will decrease the security of the society. So freedom is against security. The more freedom, less security. Less freedom, more security. So if you want to survive society, to give more security to the society, then you will have to give less freedom to the society. समझ रहे हो? पटेल, वेंकटेश, आनंद, जयश्री, विकास रे, रोमियो पायलान. Is it correct? So here we are giving less individual freedom to the individual to give more security to the individual. And what is the other reason for giving more power to the state? Because if state will not be powerful, then state won't be able to guarantee punishment. So two things are necessary here.
that why state should be powerful and why individuals should have less freedom to give security. Are we understanding this? And state needs more and more power to give more and more security. That's why state should be more powerful. चलो आज के लिए we can stop the class today here. Now the doubt time. Please ask if you have any doubts. Vikas Ray, Romeo, Venkatesh, Anand Patel. Any doubts, please ask. आनंद कुमार, ए वेंकटेश, पटेल चंद्रकांत, अनिकेत सिंह, देव दुर्लभ, रोमियो पाल, दीपक साहू, जयश्री, स्पंदन सिन्हा, विकास रे, हिमांशु, अभिषेक, देवा रुद्र, महाजवीन. No sir. So perfectly it is clear. So Hobbes is inclined towards a nation or individual. So Hobbes is giving more and more power to the sake, for the sake of nation or for the sake of individual. इंडिविजुअल व्यक्ति, हर एक व्यक्ति की रक्षा करने के लिए स्टेट का पावरफुल होना जरूरी है. So this is what Spandan is asking, that if we will give more power to the state, what is the guarantee that state will not misuse the power? So Spandan, here we do not have the option. Human beings do not have the option because they cannot trust on the society and other individual. So if they have to trust on the society and police, today also we have more trust on the police in comparison to the society. Today also we have more trust on the government in comparison to the society. इसलिए हम टैक्स देना है और कोई मोहल्ले में किसी चीज के लिए चंदा देना है तो हम चंदा देने में कतराते हैं, लेकिन टैक्स बड़े आराम से देते हैं. मतलब चोरी टैक्स में होती है, वो अलग बात है, लेकिन टैक्स देने को हम हमेशा प्रेफर करेंगे. क्यों? क्योंकि हम गवर्नमेंट को पैसा दे देंगे, लेकिन पड़ोसी और या किसी कम्युनिटी में पैसा नहीं लगाएंगे. कम्युनिटी पे भरोसा कम है, गवर्नमेंट पे भरोसा ज्यादा है. Yes, Putin can be the example. Night watchman, Chaukidar, Modi ji, all these things are best examples. Spandan is saying in communism, when community becomes equal status, becomes equal states importance thus perishes. Yes, then there is no need of the state, na? Because now we are not fearful of anyone. Therefore, Hobbes' state, Leviathan state, will have no relevance if the people have changed their heart and they have started loving with each other. So Hobbes' theory is correct for those countries where there is more and more civil war. जहां भी सिविल वॉर ज्यादा है, there only the Hobbes theory will be correct. Aniket Singh is saying you are making us intelligent. I am not understanding what I said. Intelligent. Yes, Sri Lanka is the example. So Rajpaksha is the best example of the Hobbes state. Rajpaksha, yes. Okay. So in every pleasure, there is a long-term pain. So if we are intelligent, we will try to sacrifice pleasure so that we can avoid pain. Avoiding pain is more intelligent decision than
becoming obsessive for pleasure. So those who avoid pleasure in life, they are more intelligent people. Those who control their pleasure, they are more intelligent people. सो सोसाइटी, तो हॉब्स जो है इंसान को आइसोलेट करता है, सोसाइटी के प्रति उसे पेसिमिस्टिक बनाता है. तो हॉब्स की सोसाइटी में हार्मनी होगी या नहीं होगी? टेल मी, कैन हॉब्स फॉर्मूला ब्रिंग ऑर्गेनिक हार्मनी इन सोसाइटी? कैन हॉब्स फॉर्मूला ब्रिंग ऑर्गेनिक हार्मनी इन सोसाइटी और नॉट? Yes. So I think, yes, we will discuss more on that. So one more chapter on hops and then we will start log. I hope I am neither going too slow nor too fast. Please put your comments so that it will help me in guiding my lectures going forward. Patel Chandrakant is saying that powerful state will defend the rights of weaker individual against the powerful individual. Right, sir? Yes, of course. So that's why Romeo Palan is saying pace is okay. Venkatesh, I want all of you to put your comments, opinion, because all this platform is new for all of us. So I am trying my best to deliver you the best. This is the right phase. Anand Kumar sir, you are explaining everything very nicely. Spandan Sinha is saying crystal clear security. Chalo, theek hai. Thank you so much to all of you for today. One small announcement to bring clarity. See, there are two models. Either you contact Polity Baba directly, or you are studying at this platform through a institution which you all know that, like Vanik is a institution in Odisha. So I have relations with Medici and Vanik. I have relations with other institution. So if you are coming through that institution, then all the administrative responsibility of the institution, I am only responsible for teaching you. But if you are contacting Polity Baba directly, then I will be responsible for all the administrative arrangement. I hope you all people understand this. Because so please contact your institutions, those who are coming through institution, and those who have directly approached me, then they should know that the classes are free only for 3 days and it is a paid platform, correct? So here, after 3-4 days, maximum 5 days, not more than that, because 5 days is enough time to understand that whether you can understand the lecture or not. Yes, those who will contact me, they will I will be mainly responsible for them and the videos will be available to them, correct? For 1 year guarantee, 1 year eligibility. Thank you so much for today.